From Bengal, let's move on now to the other end of the country in the west, in Jaipur, Rajasthan, where a hospital fire in one of Jaipur's biggest and most prestigious hospitals claimed the lives of 5 people, all of them inside the intensive care unit, the ICU of Jaipur's biggest hospital. This was a short circuit that took place inside the ICU of the Savai Man Singh Hospital. Relatives on the ground that spoke to NDTV claim negligence at the hospital. The ICU staff simply ran away, not staying back to try and help the helpless people inside the intensive care unit of Jaipur's biggest hospital. Rajasthan Chief Minister says this is extremely unfortunate, but those are useless words for the families. He says he's continuously monitoring the probe, but nobody can bring back the 6 people. Is this mishap, negligence, or murder? Will there be accountability for the deaths in Jaipur's largest hospital? एसएमएस के ट्रॉमा के स्टाफ गायब थे, स्टाफ नदारत थे। अचानक से भगदड़ हो गई तो हम भी हमारे पेशेंट को लेके फटाफट भाग के आए हैं। मेरी मम्मी का भी कोई पता नहीं है। मेरे पापा ने कहा तेरी भैया चली गई। 6 dead, 5 critical after a fire broke out close to midnight at Jaipur's biggest government hospital, the Savai Man Singh Hospital. The fire started in the neuro ICU on the 2nd floor, where 11 patients were admitted and quickly spread to the adjacent ward. The smoke hampered rescue operations as firemen broke windows, struggling to get in. And you can see how there are burnt beds out here, singed rather. Here you can see that they had to break this open to get inside. You can see that fire extinguisher lying there. So the scenes after the tragedy which happened here in SMS Hospital. On the streets, anger and unanswered questions. Patients moved out of their wards waited on the road for up to an hour for ambulances to shift them. Relatives of the dead patients alleged that the hospital staff did not help evacuate the ICU patients. जब वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमने स्टाफ वालों को बताया कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, सर यहाँ से धुआं आ रहा है, सर चिंगारियाँ आ रही हैं। सर ने बोला कि ठीक हो जाएगा, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। मैंने दोबारा गया, मैं सर ये हो रहा है, मैं हूँ सर, और ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे धीरे धीरे धुआं निकलने लगा, ऊपर से प्लास्टिक पिघलने लगी। जब प्लास्टिक पिघल के जब बेड के पास आई तो वहाँ से बेड निकालने लगे लोग। Relatives say they tried to work fire extinguishers to douse the flames, but these were not working inside the ICU. 2-2, 3-3 एक बाहर भी लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने से कोई नहीं चला, सारे खाली थे। वो फायर एक्सटिंग्विशर जब भरा होता तो भारी लगता ना, वो बिल्कुल हल्का था, उठाकर कैसे ही फेंक देते। The Chief Minister made a late-night visit to the hospital to oversee the situation, as did opposition leaders. Ironically, the hospital's deputy superintendent said the deaths were not due to fire, but because critical patients had to be shifted out of ICU. जैसे ही धुआं फैला तो तुरंत वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने सबको सूचित करके, क्योंकि यह न्यूरोसर्जरी का आईसीयू था जहाँ पर आईसीयू 1 जिसमें 11 पेशेंट थे, उनको तुरंत ही दूसरे वार्ड में और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। देखिए, घायल अलग से कोई नहीं हुआ है, आग से किसी की डेथ नहीं हुई है। आईसीयू में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफी था, उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं है। Fire officers and the FSL team visited the site of the accident, but there are no answers as to why there were no sprinklers on the 2nd floor of the trauma ward in case of fire. Why did the fire alarm not go off? And why basic firefighting equipment like fire extinguishers just didn't work at a time of crisis? In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV.